Hello students, welcome to the session. So today we are going to see the definite integration. देखो भाई definite integration में क्या है, हमें एक definite value मिलती है unlike in the case of indefinite integration. अगर आपको याद हो indefinite integration में we always have a c constant being added up in our expression or in our answer, but यहाँ आपको एक definite value मिलेगी. तो बिना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी प्रॉपरली. देखो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा. यहाँ आपको फिक्स वैल्यू मिल रही है और एक यूनिक वैल्यू भी मिलेगी. ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसकी आपको मल्टीपल वैल्यू मिलेगी. जस्ट लाइक फंक्शन एक हमेशा में क्या देता है, एक सिंगल आउटपुट देता है. ठीक है. अब एक चीज और समझिए. देखो लेट्स रीड द थ्योरी. यहाँ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. 1 minute. यस. Let f of x be a continuous function. Okay, we are like taking a continuous function defined on a closed interval a and b. It means function is also defined on a and on b. The integration fx dx is equal to capital Fx plus c. Fine. fx को अगर जैसे एक स्मॉल फंक्शन fx है उसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपको एक कैपिटल fx c आता है. ये कैपिटल fx c जो हमारा है ये वही डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो आता है, सॉरी इनडेफिनेट से, इनडेफिनेट वाला. ठीक है. प्लस सी है वहां पे. अब होगा क्या, जो इनडेफिनेट में आपका एफ एक्स आया था, फंक्शन जो इंटीग्रेट करके आया था, उसमें जैसे हम लिमिट पुट कर देंगे ए और बी को तो हमें एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी. यहां से मुझे एक यूनिक एंड फिक्स वैल्यू मिलेगी. यूनिक वैल्यू. फाइन. और इसका मतलब क्या है, जैसे ये तो एक शो करने का तरीका है कि वी हैव अप्लाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें नीचे हमने लोअर लिमिट लगाए रखी है ए और ऊपर अपर लिमिट बी. लेकिन समझने की कोशिश करो. इसका मतलब होता है कि हम अपर लिमिट फंक्शन में पुट करेंगे, माइनस करेंगे लोअर लिमिट के साथ. सो आर गेटिंग इट. दिस इज द मेन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द केस ऑफ, आई कैन से, डेफिनेट इंटीग्रेशन. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो मैंने आपको अभी डिफाइन करवाया है विद इन द लिमिट्स ए एंड बी. फाइन. ए से बी का हम एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दो पॉइंट्स के बीच में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी. ठीक है. द इंटरवल ए बी इज ऑल्सो कॉल्ड द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. एक अदर नाम है विच यू मस्ट नो बिकॉज इट कैन बी like in some question this can be like put upon to you and you may get confusion. तो ये भी जरूरी है that it's sometime called as a range of function like a to b. So this is very easy to relate even also, but it's my duty to tell you each and everything. Now every definite integral has unique solution. This is what I have told you earlier also. Fine. The main thing to take away from this particular thing is this only. I must say this one, that is the definite integration. You just have to put the upper limit into the indefinite integral which you got minus f of a. Obviously we have many properties where we surpass doing this all thing. Rather I must say we will not be finding indefinite integration, but obviously this upper limit and lower limit, try to understand, you have to put up in the function. Fine. Like whatever, like in some cases obviously the things will be coming up, like it will be reducing the intermediate step, but at the last you will be having some result on which you have to put this upper limit and lower limit. I must repeat, there is some last results which you are getting. Okay. Obviously that indefinite integration I can say is coming actually, but the mediate step can be reduced by using the property. वो ज़्यादा टेंशन मतलब, जैसे हम प्रॉपर्टी करेंगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन जो लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको बेसिकली अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना है. ठीक है. अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे फिर लोअर लिमिट. अब देखो ये भी है रिप्रेजेंट द नेट एरिया ऑफ द कर्व विद एक्स एक्सिस. जैसे अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझाऊं, सपोज कोई भी एक फंक्शन ऐसे कोई डिफाइन है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली बात करी मुझे ए से बी के बीच में डिफाइन मतलब टॉक करना है या बात करनी है, तो उसके बीच में जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आता है वो एक्चुअली एरिया अंडर दैट कर्व विद द एक्स एक्सिस है. ठीक है. एरिया अंडर दैट कर्व कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज, आई कैन से, इन्फानाइट. समझ रहे हो. लेकिन अगर मैं उसको एक्स एक्सिस के साथ लूंगा तो एक फिक्स एरिया आ जाएगा और ए विद इन द लिमिट्स ए एंड बी. ठीक है. यहाँ जहां पर x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी तक जा रहे हैं हम. फाइन. तो दैट्स अ एरिया आल्सो. फाइन. Now try to understand this thing with the help of example so that we will be become used to with this.
Now the example is this. We have to understand that sine square x. Now as of now we haven't studied any property or any other thing. So directly obviously we are going to find the indefinite integration of this. Then we are going to put the limits. Now try to understand this sine square x. If you remember, we can always write it as 1 minus cos of 2x by 2. Obviously now you need to integrate this. Now I will taking 1 by 2 integration and cos 2x integration, cos 2x by 2 rather, more precisely. Obviously I am skipping the steps where I'm writing dx and all this, but you know this is going to be happening. Fine. So you got this. Now I can say 1 by 2 x you will get for that. Obviously here also you have to apply the limits. What are the limits? Or you can apply the limits on the final results also. So let's do in this way, that that part I got this. And cos 2x I know it will be actually integration is sine 2x upon 2, that means 4 you will get. This is a final result. Fine. And over here you are going to put the limits which is given in the question as 0 and pi by 2. So 0 and pi by 2, it means, give me a second, it means I'm going to put the pi, okay, just yes, it means I'm going to put the pi by 2 first, that means 1 by 2 into pi by 2, okay, minus sine of 2 into pi by 2, that obviously 0, so I'm taking a 0 over here, that's the upper limit, minus, now 0 minus 0, so you are getting actually as pi by 4. Fine. So this is a very simple explanation of the very basic part of the, I can say, definite integration, where I just want to explain you that how we use the upper limit lower limit concept, and how we find the definite indefinite integration, and we are going to put into that. Okay, in properties you may understand that you may skip up the whole process of finding the indefinite integration, but rather at the end the result of indefinite integration you will get, or whatever I can say, you have to put the upper limit and lower limit. Fine. So this is the thing you have to understand, and obviously I have given you the pre-written explanation or pre-written solution for your better like understanding, or may you can like refer it later in the notes with that. Okay, fine. So just see this. We have 0 to pi by 2 sine square x dx, and then we have 1 minus cos 2x, which I've converted, I've shown you, and then a simple integration I've done, and we got the pi by 4 as answer. Okay, so